Okay, guys, good morning. How are you guys? I am visible and audible to everybody. Am I visible and audible? Good morning, Bishwas. Good morning, Shinsupa Dvivedi. It seems you are new to the class. Do watch my videos on Unacademy Learning app as well. They are very useful. Hello, Nikita, Charchika, Ramandeep, Khemraj, Balaji, Rambhau. Good morning. So I hope Okay, so I'm visible and audible. Great. So, guys, let's crack UPSC CSE with India's largest learning platform, that is Unacademy. This is all about me. There is a special video about me. On Unacademy, you will get daily live classes, structural courses, live test, and unlimited access to all these live classes which are in recorded format. India's top educators will be educating you for different competitive examinations. Good morning, Nehal. So you can see the list of the top educators. Then on Unacademy, there are courses of each and every subject and more than one course for a single subject. You can see the list of the subjects. And here you will get mains answer writing as well as interview preparation guidance as well. Abhinav Prakash, good morning. So guys, here you need to do one thing. You need to subscribe to Unacademy for more and more useful videos for your preparation. Okay, and the subscription here is the fees for 12 months. You have to pay 44,000 rupees, but if you use my code SKUS, you will get immediate 10% discount and your fees will be 39,600. Guys, this hike is recent. Previously it was 36,000 rupees. So you need to do it as early as possible. The moment you decide you are subscribing, you should do, because this hike will increase. Even we don't know when it will happen, but it happens, and then you will say ki sir ab to fees बढ़ गई. In case of 24 month, fees is 64,000 rupees. Still it is very low compared to offline settings. You will pay only 57,600 if you use my code SKUS, and you will get 10% discount. So do subscribe to Unacademy. Fine. So today we are going to discuss RT-PCR, or reverse transcription PCR. Okay. For to understand this, first you need to understand why we are going to discuss this. So let me show you the article from the Hindu. This is the article from the Hindu, 7th June. ये 7th June का article है. Now in this case we already discussed PCR. What exactly we did in PCR, please answer in comment box. So if you know what is PCR, then only you can understand what is RT-PCR. Okay, both these terms are known to you. RT का long form क्या होता है? Reverse transcription polymerase chain reaction. So you know what is reverse transcription, you know what is PCR, so you can easily understand or get a fair idea about what RT-PCR is. Now here, why this RT-PCR was in news? So in this section of this article, you can see, I hope you read this article. अगर आपने read नहीं किया है, do read this article. Okay. So in this article, first page, first section of this article क्या कहता है? If you see, कि इस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि जो RT-PCR मेथड है, it is a, see, what is the best way to fight COVID-19? Best way to fight COVID-19 is tracing. Remember this for your prelims. Remember this for your preliminary examination. Very good, Gargi. The main aim behind PCR technique is to make multiple copies of DNA. From single DNA sample, we can make millions or billion copies of DNA. Okay, got it? So you need to remember this for prelims: tracing, testing, and isolation. These are the three things which can be used effectively to contain virus spread. If we want to contain virus spread, what you need to do? Three things: trace, test, and isolate. Okay, this operation was conducted by which state government in India? Answer in live chat. And what was the name of that operation जिसमें वो ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड आइसोलेशन लार्ज स्केल पे कर रहे थे? फाइन. Now
करंटली जो हम यूज कर रहे हैं वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, RT-PCR we are using for testing. What we are doing? First tracing, testing, and then isolation. So for testing right now we are using RT-PCR. The problem with RT-PCR is it is time consuming and expensive. It is time consuming and expensive. This is the problem with RT-PCR. Clear? पहला पैराग्राफ क्लियर हुआ. What we should do to for effective containment of COVID-19? Tracing, testing, and isolation. For testing we are using RT-PCR technique. The problem with RT-PCR technique is it was Delhi Charchika. Okay. It is a time consuming and expensive method. It is costly and it is time consuming. If you went through current affair, Delhi government and even government of India is saying that those who do not have symptoms, they need not to get admitted into hospital. They should be treated at home. Why? Because there is a lack of hospital beds. Clear? So अगर ये सब चीजें कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है, तो वी मस्ट हैव सम सॉल्यूशन. सो that solution is given by this organization, CCMB. CCMB is a Hyderabad based organization. We are coming across this organization a lot of time. So this CCMB came up with solution. इन्होंने सिर्फ एक काम किया है, अभी के लिए सिर्फ अंडरस्टैंड कीजिए, ये सब चीजें RT-PCR में मैं एक्सप्लेन करूंगा. What CCMB did, they just skipped the RNA isolation stage. What they did, they bypassed RNA isolation stage, and because they bypassed RNA isolation stage, the cost and time of RT-PCR or testing of COVID-19 reduced. क्या किया है देखिए, फिर से मैं सम अप कर रहा हूं शॉर्ट में. What we need to do to effectively contain COVID-19 disease? Trace, test, and isolate. Right now, what we are using to test COVID-19, the method is RT-PCR. Correct? Good morning, Aprajita. I'm happy you are here as well. Okay. So testing के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? RT-PCR. What is the problem with RT-PCR? It is a Priyansh Rawat. Is it so, guys? Is it? Priyansha is saying video quality is not so good, sir. So if is it, please let me know. I will do things with the OBS. अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता. I will try to change settings of the software which I am using right now for the videos. Okay. So testing is time consuming and expensive. Now, how we can reduce the time required for test as well as we can reduce the cost? So we are doing that. Our organization, Hyderabad based organization CCMB, is doing that by bypassing RNA isolation stage. By bypassing RNA isolation stage. Clear? यहाँ तक clear हुआ? How to contain? Which method is being used to test, and what are the problems of that method and how we resolve that problem by bypassing RNA isolation stage. Now one of the student asked me, sir, what is the difference between dry swab and nasal swab? I will explain you that also, the difference between dry swab and nasal swab. Before that, so यहाँ तक clear हुआ? Then देखिए, right now यहाँ पे अगर आपको किसी को ये प्री प्रिंट पता नहीं तो डू आस्क मी इन ऑन व्हाट्सएप, आई विल एक्सप्लेन यू. ओके. सो जो यूजुअल मेथड है उसमें हम क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग nasal swab. What we are doing? We are using nasal swab in current method, and because of that, what is happening? You can see the nasal swab. This is how nasal swabs are taken. Clear? Got it? So this is what artificial intelligence does. Then second, we are transporting these nasal swab into a transport medium. Into a transport medium जिसे कहा जाता है viral transport medium. Into a transport medium जिसे हम कह रहे हैं viral transport medium. संतोष कुमार, please ask me what you didn't understood. अब देखिए, आपको RNA isolation stage तक सभी को समझ में आ गया that
what we need to, how we can reduce the time and the cost of test. We can reduce the time and cost of test by bypassing the RNA isolation stage. Now how we will bypass that, I will explain you in RT-PCR technique. We went ahead, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं nasal swab और dry swab में difference. Why? Because in case of RT-PCR technique we use nasal swab, and the method invented by CCMB, which is reducing the cost and the time, that method is using dry swab. तो nasal swab के लिए क्या होता है, बेसिकली आप में से हर किसी ने ब्लड टेस्टिंग के लिए दिया होगा, करेक्ट? एवरीवन गिव्स ब्लड फॉर टेस्टिंग. जब आप ब्लड टेस्टिंग के लिए देते हो तो वो क्या करते हैं, एक वायल में ब्लड लेते हैं, राइट? द बेसिक टेंडेंसी ऑफ ब्लड इज टू कोआगुलेट once that blood is outside your veins. बट वो वायल में कोआगुलेट नहीं होता, क्योंकि उस वायल में कुछ केमिकल्स या मीडियम्स ऐड करती है और उसमें ये ब्लड ऐड कर देते, तो उससे वो ब्लड कोआगुलेट नहीं होता, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट मीडियम. सो ओके निखिल, आई विल एक्सप्लेन, जस्ट स्टे ट्यून्ड, यू विल गेट द आंसर इन द लेक्चर. क्लियर? सो वो हो गया ट्रांसपोर्ट मीडियम. इन द सेम वे जब हमने नेजल स्वैब लिए, नेजल स्वैब लेने के लिए if we add that nasal swab in some medium or transport medium, because we are transporting a virus through that medium, तो उसे हमने नाम दिया viral transport medium, और ये liquid होता है, and this is liquid. Dry swab में क्या होता है? What happens in dry swab? Here you can see, आपने सभी ने ड्राई स्वैब का, आप यहाँ पे साइड में राइट हैंड साइड में image, I hope Cortona gives the image. If you can see, this is the image of dry swab. इसमें लिक्विड नहीं होता, इसमें क्या यूज होते हैं, कॉटन स्वैब्स यूज होते हैं. ईयरबड्स जो हम यूज करते हैं ना, उन्हीं ईयरबड्स को अगर आप स्वैब लेने के लिए यूज करोगे और उसे अगर किसी लिक्विड मीडियम में ऐड नहीं करोगे तो दैट इज ड्राई स्वैब. नाउ ड्राई स्वैब को प्रोटेक्ट करने के लिए या स्टोर करने के लिए what we use, see here, either we use Tris EDTA buffer solution or we use ice. 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हम उस ड्राई स्वैब को स्टोर करते हैं, या फिर -80 डिग्री टेम्परेचर में. सो यहाँ पे मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बताया. In case of nasal swab, we add the swab into some liquid medium so that it can be transported and it will be protected. These mediums are used to protect the DNA or RNA of the bacteria or virus. वो destroy ना हो. That's why we use these transport mediums. In case of dry swab, instead of liquid medium, what we do, we keep that swab dry and we store it at low temperatures of 4 degree or -80 degree. तो उससे भी क्या होता है, वो वायरस या बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसलिए हम उसे ड्राई स्वैब कहते हैं. इन केस ऑफ RT-PCR we use nasal swab, and in case of the method that is invented by CCMB we use dry swab. Because we are using dry swab, the cost will reduce. Because we are using dry swab, cost will reduce. Clear? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? What is dry swab? What is nasal swab? What are the tests that are involved for containment of COVID-19? What are the problems with that test and how we can resolve those problems? Clear? Rest is in this article. You can read this article by yourself, and if you have any doubt related to this article, you can ask me. Now here we are going back to the slides. Now we will discuss RT-PCR, because the article is mainly talking about RT-PCR, reverse transcriptase polymerase chain reaction. So that's why we will go back to the RT-PCR. Now here, first thing, everyone knows about everyone knows about the virus. That is the name of the virus which causes COVID-19 disease. The name is SARS-CoV-2. गाइज, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने SARS-CoV-2 पे इतनी बार बात की है? We discussed COVID-19 so many times कि अब उस पे कोई भी क्वेश्चन आने दीजिए. You will be like, wow, this is so simple. You will be like, अरे ये तो मुझे आ ही जाएगा, right? है ना? तो अब ये COVID-19, this SARS-CoV-2, and we know it is a
RNA virus. We also already discussed the types of virus. ठीक है, टाइप्स ऑफ वायरस कितनी है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वायरसेस? टोटल 7, जिसमें डीएनए वायरस भी है, आरएनए वायरस भी है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस भी है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, पॉजिटिव सेंस है, निगेटिव सेंस है, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड. क्लियर? सो अब यहाँ पे वन बाय वन. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज आरटीपीसीआर? What is RT-PCR? It is reverse transcription polymerase chain reaction. Why not polymerase chain reaction? Why we are using RT-PCR? Very good, very good. Charchika Kapil Balaji 7. Why we are using RT-PCR? In case of making multiple copies of SARS-CoV-2 genome and not PCR. Yes, Durgesh 7. क्यों यूज कर रहे हैं आरटीपीसीआर? अब यहां पे देखिए, वन बाय वन आंसर कीजिए आप. इन केस ऑफ पीसीआर वी मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ पीसीआर वी मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ व्हाट? बताइए, किसकी कॉपीज बनाई जाती है? पीसीआर में किसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर इन लाइव चैट गाइस. वी मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए इन पीसीआर, बट SARS, yes, DNA, correct. But SARS-CoV-2 is a RNA virus. SARS-CoV-2 is a RNA virus. अब इसके पास तो डीएनए है ही नहीं, और अगर हमें इसे डिटेक्ट करना है तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट दिस आरएनए इनटू डीएनए. And how we create RNA, how we create DNA from RNA? Through reverse transcription. So इसमें basically हम क्या करते हैं? We convert RNA of SARS-CoV-2 into the DNA, and then we make multiple copies of this DNA in PCR. That's why this technique reverse transcription PCR. अब समझ में आ गया why we are calling this RT-PCR? Everyone got it? Khemraj, reverse transcriptase to make DNA from RNA. Correct. Got it? RT-PCR, guys. Now why we are not calling this PCR? Why we are calling this method RT-PCR? Understood everyone? I hope everyone understood. Clear? अब यहां पे देखिए, the DNA that we produced from RNA, इस डीएनए को हम कहते हैं cDNA और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. Why? Because this is not the original genetic material. Original genetic material is RNA, but because this DNA is produced from the original genetic material, तो हम इसे क्या कह रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. क्लियर? अंडरस्टूड एवरीबडी? नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, RT-PCR का नेक्स्ट पॉइंट. ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज द लिंक दैट आई प्रोवाइडेड हियर. ये IAEA की लिंक है. इस पे आपको एक वीडियो भी मिलेगा और एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल आर्टिकल मिलेगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, विच इज रिलेटेड टू रियल टाइम RT-PCR. ओके, ये अगेन थोड़ा अलग मेथड है, रियल टाइम RT-PCR. दैट यू विल रीड फ्रॉम दिस लिंक. आपको ये रीड करना है, ठीक है? क्लियर? तो real-time RT-PCR is one of the most accurate methods for detecting, tracking and studying COVID-19 virus. अभी रियल टाइम एंड नॉर्मल RT-PCR दोनों में मैं आपको डिफरेंस एक्सप्लेन कर दूंगा. अभी याद रखिए, अब नाउ यू नो 3 things. 1, PCR. For PCR will be used for which bacteria or viruses whose genetic material is DNA. Then RT-PCR. It will be used for those viruses whose genetic material is RNA. थर्ड, रियल टाइम RT-PCR. रियल टाइम RT-PCR से क्या होता है? हमें इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं. हाउ? आई विल एक्सप्लेन यू. क्लियर? RT-PCR आपको इस लिंक से पढ़ना है. नाउ व्हाट इज रियल टाइम RT-PCR? ओके, नाउ बेसिकली होता क्या है, आपको यहाँ पे PCR अच्छे से याद रखना पड़ेगा. PCR मेथड में क्या होता है? दिस इज DNA. Okay, and these are the bonds AT
एंड CG, करेक्ट। ये बॉन्ड्स है बिटवीन नाइट्रोजनस बेसेस। बहुत केयरफुली सुनिएगा। ये पहली जो मेथड है जिसे हमने कहा था डीनेचुरेशन, है ना, डीनेचुरेशन, हमने क्या किया, इन बॉन्ड्स को ब्रेक किया। तो नाउ वी हैव टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। सपोज दिस इज वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दिस इज वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, और इसके जो बेस है वो है A, T, C, G and T. Those who do not know about these nitrogenous bases consider them as alphabets अभी के लिए, ठीक है, क्लियर। तो अभी ये एक हो गया। अब देखिए हमारे पास ये जो डीएनए, दिस डीएनए इज फ्रॉम आरएनए, SARS-CoV-2 के आरएनए से ये डीएनए बना हुआ है, फाइन। अब हमें इस आरएनए का सीक्वेंस ऑलरेडी पता है, तो हम क्या करते हैं, इस डीएनए के दूसरा स्ट्रैंड प्रिपेयर होने के लिए हम आर्टिफिशियल डीएनए ऐड करते हैं पीसीआर में। एज वी नो, वी ऐड न्यूक्लियोटाइड्स। इन दिस केस वी ऐड स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स, ठीक है। अब ये जो डीएनए सेगमेंट्स है ना, दीज आर आइदर रेडियो एक्टिव, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल एक्ट एज अ मार्कर, दीज आर आइदर रेडियो एक्टिव और these are nitrogenous bases which release fluorescent dye, they release fluorescent dye, ठीक है। यहां पे मार्कर के लिए हम यूज कर रहे हैं, see this DNA is a complementary DNA which is produced from the RNA of SARS-CoV-2 and when we are multiplying this DNA, तो उसमें क्या होता है, पहले तो हमने डीनेचुरेशन किया और बाद में ये पर्टिकुलर मार्कर पर्पसफुली हमने इंट्रोड्यूस किए, और इन मार्कर्स को, स्पेशल मार्कर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे डिसाइड किया जाता है कि वेदर वायरल आरएनए और डीएनए इज प्रेजेंट इन द सैंपल और नॉट। इफ ओनली वन मार्कर इज यूज्ड, ओनली वन मार्कर इज यूज्ड, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन में वायरल आरएनए है लेकिन नंबर इज वेरी लो। इफ मोर देन वन और सपोज 100 मार्कर यूज हो गए, तो इसका मीनिंग क्या है, वायरल लोड इज मोर। 100 मार्कर अगर यूज हो गए तो इसका मीनिंग क्या है, वायरल लोड इज मोर, क्लियर। या फिर ये जो मार्कर यूज हुए हैं ये रेडियो एक्टिव है तो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर ये फ्लूरोसेंट डाई रिलीज कर रहे हैं, दे आर रिलीजिंग फ्लूरोसेंट डाई, तो जब ये रिलीज कर रहे हैं ना फ्लूरोसेंट डाई, तो वी कैन ऑब्जर्व द चेंजेस इन द कलर। पीसीआर के उस ट्यूब में कलर में चेंजेस देख सकते, उसी को कहते हैं रियल टाइम। मतलब जब पीसीआर टेक्निक या पीसीआर मेथड ऑन है तभी हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर वायरस इज प्रेजेंट इन दैट सैंपल और नॉट, इसलिए उसे रियल टाइम कहते हैं। तो उससे होगा क्या, रियल टाइम पीसीआर से कम टाइम में हमें रिजल्ट मिलेगा, वी विल गेट रिजल्ट इन लेस टाइम, क्लियर। यस रमनदीप, क्लियर, रियल टाइम का समझ में आ गया। यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दी स्पेशल मार्कर्स टू आइडेंटिफाई वेदर वायरल आरएनए इज प्रेजेंट इन द सैंपल और नॉट। क्योंकि जो सैंपल होता है ना, जो स्वैब हम लेते हैं ना, उस सैंपल में वी हैव आवर ओन डीएनए एज वेल एज वी हैव इवनिंग चौहान, वी ऑल्सो हैव द आरएनए ऑफ द वायरस। तो इफ दीज स्पेशल मार्कर्स आर नॉट यूज्ड, पीसीआर में हमने स्पेशल मार्कर इंट्रोड्यूस किए बट दे आर नॉट यूज्ड, इसका मीनिंग क्या है, देयर इज नो वायरल आरएनए, देयर इज नो वायरल डीएनए। एंड इफ दीज स्पेशल मार्कर्स आर यूज्ड, इट मींस देयर इज अ वायरल आरएनए। उस सैंपल में क्या है, वायरल आरएनए या वायरल डीएनए, मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर यूज नहीं हुए तो टेस्ट निगेटिव है। जैसे फ्लोरोसेंट डाई अगर रिलीज हुआ तो टेस्ट पॉजिटिव, रिलीज नहीं हुआ तो टेस्ट negative. This is real time PCR. Shrihari, yes, I am trying my best to explain in English. Now here we were discussing about isolation of RNA. Isolation of RNA. Now tell me one thing, if we want to use complementary DNA, cDNA in PCR, first we need to convert this RNA into DNA, clear? And if we want to convert this RNA into complementary DNA, what we need,
we need to isolate RNA. Now for this isolation there is a lot of time required, and it is because of this it becomes expensive. अभी हमने जो RT-PCR मेथड देखी ना, इसमें भी क्या हो रहा है, we are isolating RNA. But the method invented by CCMB, in that method there is no need of isolation of RNA. This is the main difference. Here I am not explaining you the method invented by CCMB. अभी तक वो मेथड प्रूव होना बाकी है, वो मेथड यूज होना बाकी है. अभी वो पीयर रिव्यू जर्नल्स में उन्होंने सबमिट की है, ठीक है. तो वी आर डिस्कसिंग RT-PCR जिसके ड्रॉबैक है, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव. तो अब आपको समझ में आया why we are isolating RNA in RT-PCR technique. This is one of the steps in RT-PCR, because if we want a complementary DNA which is required for PCR, we need to isolate RNA, and that's why it is time consuming and expensive. It is time consuming and expensive. It is bit technical guys, लेकिन आप अगर ये वीडियो एक दो बार देख लोगे ना और आर्टिकल अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. क्लियर? सो दिस इज व्हाट happens in real time RT-PCR. Why we are calling this real time? Because in real time RT-PCR results are visible during the process, and in case of normal RT-PCR results are available at the end of the process. This is the main difference. In real time RT-PCR results are visible or available during the process, but in case of normal RT-PCR results are available at the end of the process. So natural है कि real time PCR consumes less time and normal RT-PCR consumes more time. Hello Satish. Done? Clear? We are discussing RT-PCR only. Why it is less time consuming real time RT-PCR? Because we are using special markers, either radioactive isotope or fluorescent dyes. That's why it is easier. Clear? So end of the process में ही मिलते हैं. Fine. Second thing which is very important for your preliminary examination guys, this is very important for your preliminary examination. Answer me where we can use RT-PCR technique. In which diseases we can use RT-PCR technique for diagnosis? In case of which viruses we can use RT-PCR technique for diagnosis? Answer me in the comment live chat. Quickly answer कीजिए, ठीक है? Correct. In case of RT-PCR, it is must कि that virus has a RNA as a genetic material. अगर RNA is genetic material, if RNA is genetic material, then only we can use RT-PCR method. Then only we can use RT-PCR method. Got it? Now see, in case of COVID-19, SARS-CoV-2 genetic material is RNA, so we can use RT-PCR method. In case of Ebola virus, genetic material is ssRNA, means we can use RT-PCR method. In case of Zika virus, genetic material is RNA, single stranded RNA, means we can use RT-PCR method. So primary requirement to use RT-PCR method for diagnosis of viruses is genetic material should be RNA. Otherwise अगर DNA है तो we can simply use PCR. Clear? Clear guys? I hope you understood. Most of the students are answering correct. Okay. So in case of COVID-19 virus, what we do? COVID-19 के केस में क्या काम करते हैं? We take swab. कहाँ से swab लिया जाता है? We take swab either from nose or from throat. When we take swab from nose or throat, in that swab there are viruses, मतलब SARS-CoV-2 भी होगा. There will be protein, there will be human cells in that swab, there will be human cells in that swab. Clear? ये सब होगा उसमें. कौन से? नोज या थ्रोट का जो हम स्वैब ले रहे हैं टेस्टिंग के लिए. So everything will be present. Now these are of no use for us. उस स्वैब में ये दोनों प्रेजेंट है, हमें इनका कोई यूज नहीं है. तो what we do?
we extract only RNA. We extract only RNA. This is isolation of RNA. And to achieve or to extract only RNA, what we do, we treat that sample with chemicals. अलग अलग केमिकल सॉल्यूशन हम यूज करते हैं एंड वी ट्रीट दैट सैंपल विद दीज केमिकल सॉल्यूशन. सम केमिकल सॉल्यूशंस विल डिस्ट्रॉय प्रोटीन, some chemicals will destroy human cell, some chemicals will destroy something, anything else that is present in the swab. Only viral DNA will not be destroyed. This is isolation of RNA. This is isolation of RNA. Clear? So ये पहली step हुई. What we did, we took a swab from nose or throat and then we treated that swab or swab of nose or throat with chemicals, and these chemicals removed the proteins, fats and human cells from the swab, and now we have only RNA or viral RNA. ठीक है? Now this extracted RNA जो है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था, extracted RNA में हमारा जेनेटिक मटेरियल भी होता है. तो फिर जब हमें पीसीआर में यूज करना है तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग स्पेसिफिक मार्कर्स, विच स्पेसिफिक मार्कर डीएनए, स्पेसिफिक मार्कर डीएनए. अब ये जो स्पेसिफिक मार्कर डीएनए, दिस विल अटैच टू ओनली दोज डीएनएज विच आर कॉम्प्लीमेंट्री, और सी डीएनए विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी आरएनए. राइट? ओन जेनेटिक मटेरियल से वो अटैच नहीं होंगे. दैट्स व्हाई this specific DNA और markers are required. So उस genetic material भी present होता है और extracted RNA भी present होता है. Clear? Next, we know this. Fine. यहाँ पे देख रहे हो RNA जो है उससे हम क्या करते हैं, DNA बनाते हैं with the help of reverse transcriptase enzyme, and after that we add some additional short fragments of DNA. These short fragments of DNA are the markers. These short fragments of DNA are the markers. ठीक है? That are देखिए, these fragments that are complementary to specific parts of transcribed viral DNA. They are complementary. जैसे अगर A, T, C और G है transcribed DNA पे, तो ये क्या होगी, T, A, G और C. ये होगा शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए. दिस इज शॉर्ट फ्रैगमेंट. ये जाकर कहां अटैच होगा, इन्हीं को अटैच होगा. तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि यस देयर इज वायरल आरएनए प्रेजेंट इन द सैंपल. सैंपल में वायरल आरएनए है, तो टेस्ट क्या हो गई, पॉजिटिव आ गई. सो टेस्ट इज पॉजिटिव. दिस इज हाई इंडियन बॉय ऑल इन वन. हेलो, नाइस नेम. So this is how RT-PCR method is used in the detection of COVID-19 virus. Clear? Understood? Then ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये मार्कर्स होते हैं या फिर फ्लोरोसेंट डाइज होती है, और वो बाद में हम यूज करते हैं. फाइन? क्लियर? फाइन. और रियल टाइम हमें वो पता भी चल सकता है. तो ये सारी नोट्स आपको अवेलेबल है कहाँ पे, पीडीएफ फॉर्मेट में. यू विल गेट ऑल दीज नोट्स फ्रॉम दी फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल. अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखिए, साइंटिस्ट मॉनिटर हाउ मेनी साइकिल्स इट टेक टू रीच दिस लेवल. मतलब अब देखिए पीसीआर में क्या है, फर्स्ट साइकिल में 2 कॉपीज बनेगी, सेकेंड साइकिल में 4, थर्ड साइकिल में 8, फिफ्थ साइकिल में 16. तो कौन सी साइकिल में एक हाईएस्ट लेवल, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ मार्कर डीएनए इज यूज्ड या फ्लोरोसेंट डाई रिलीज हुई, ये वो देखते हैं. जितने कम लेवल्स में ये यूज होता है उतना ज्यादा वायरल लोड है. जितने कम लेवल में यूज होगा उतना ज्यादा क्या है, वायरल लोड होगा. ओके, सो दिस इज हाउ वी डिसाइड की सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन. इफ specific marker DNAs are used in first 3 levels, more they are used in first 3 level, that means there is a severe viral infection. If these markers are used completely in 10 or 20 cycles, it means कि इस viral infection is low. मतलब viral load हमें पता चलता है depending upon the use of that specific marker DNA or the fluorescent release of fluorescent dye. Clear? यहाँ पे आप देख सकते हो रियल टाइम RT-PCR जो है, it can give result in 3 hours
It can give result in 3 hours, and normal PCR RT-PCR technique takes 6 to 8 hours. So it is time consuming. Immediate result नहीं मिलते हमें. Fine, clear? A problem with this real time PCR RT-PCR method is, remember for your prelim का statement है, real time RT-PCR method cannot be used to detect past infections. Remember, we can use real time RT-PCR method only to detect what? Current infections. Previous infections हम detect नहीं कर सकते. For example, मुझे I got an infection of SARS-CoV-2 and I got well by myself. मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि कोरोना वायरस ने मेरे बॉडी में एंटर किया और वो निकल गया. बट आपको पता है हाउ वी कैन डिसाइड वेदर आई गॉट इन्फेक्टेड और नॉट? If there is no symptom, I didn't conducted any test. Yes, it is a very expensive test, Aparajita. It is an expensive test. Okay, answer my question. If I got a infection of COVID-19 and I got well without visiting a doctor, without taking test, anything, मैं अपने आप ठीक हो गया. So हमें बाद में कैसे पता चल सकता है कि I was infected with COVID-19? कैसे पता कर सकते हैं हम? Yes, answer in the live chat. We will, if antibodies are present in my blood against COVID-19, if these antibodies are present in my blood, even if there is no viral RNA, but antibodies are present, because these antibodies are present for lifetime. So presence of this antibody can tell us about past infections. This RT-PCR method, no, not by RT-PCR. RT-PCR method cannot detect past infections. RT-PCR method cannot detect past infections. Remember this, guys. So I am going to sum up. मैं sum up करने वाला हूँ. Just stay tuned. We are at the end of the lecture. ठीक है? I am going to sum up one by one. Just be attentive. First thing हमने क्या देखी? That the effective way to contain COVID-19 disease is tracing, testing and isolation. We are using RT-PCR method to test, but there are problems with this method. For very good, Gargi. The problem is RT-PCR method is time consuming and expensive. You know why RT-PCR is time consuming and expensive. अभी हमने देखा even real time RT-PCR takes 3 hours to get result, और normal RT-PCR it takes 6 to 8 hours. ये तो प्रोसेस का टाइम हुआ. To carry that swab from the patient to the lab, फिर वहां पे लैब में उसका नंबर आना, फिर टेस्ट करना, it take a day or more than a day. So it is a time consuming and expensive. Fine. So how we can reduce the time and the cost of RT-PCR or cost of the testing COVID-19? So CCMB, Center for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad, came up with a technique in which they are using dry swabs, and in this technique they are bypassing the RNA isolation stage, जिससे time और cost reduce हो रही है. In case of RT-PCR as well as real time RT-PCR, we do follow the step of RNA isolation. Clear? Then nasal swab, if we are using nasal swabs for testing, so we use viral transport medium or VTM, which is a liquid. And if we are using dry swab, we store these dry swabs either in the ice, that is 4 degree Celsius, or minus 80 degree Celsius, जिसे हम स्टोर करते ट्रिस EDTA medium में. No need to remember VTM and EDTA. What you need to remember, dry swabs are stored without liquid medium and nasal swabs are stored in liquid medium. Clear? So this is all about in this article. इस article में यही था. फिर हमने, because this article mentioned RT-PCR technique, तो we discussed RT-PCR. हमने क्या किया? RT-PCR को discuss किया. Correct? अब RT-PCR में हमने क्या क्या देखा? First thing, what is RT-PCR? Reverse transcriptase PCR method, where we can use RT-PCR method for diagnosis in those viruses whose genetic material is RNA only. Okay, then RNA से we make DNA, that's why reverse transcriptase PCR method. Okay,
So then in this RT-PCR method, there is one another method which is known as Shreya, if a person is affected by COVID-19 and antibodies are produced in his body, does there is a probability to infect him the same disease after he recovered from the first infection? Yes, because if these antibodies are not enough, he will contract that disease again, but he will not be, that disease will not be as severe as first infection, because that person's body has already antibodies to fight that disease, so that infection will not be severe like first infection. Clear, Shriyari? No, and Gargi, antibodies never cause disease. Antibodies, they fight against disease. Indian bull, boy, what you are saying, it may be. Okay, fine, Ramandeep. Clear? So in RT-PCR there is one another method जिसे हम क्या कहते हैं? We call that method real time. What we call that method? Real time RT-PCR. In case of real time RT-PCR, we use spatial markers, either radioactive isotope. We use spatial markers, either radioactive isotope or fluorescent dyes, to detect presence of genetic material of virus in real time. Real time method is less time consuming. Okay, in case of normal RT-PCR, we get result at the end. In case of real time RT-PCR, we get result in the middle in less time. Then here I gave you examples of Zika virus, Ebola and COVID-19, which are RNA, in which case we can use method for testing. Fine. Then this is already explained how we extract RNA, and last में शॉर्ट फ्रैगमेंट से डीएनए की, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा. एंड लास्ट में मैंने आपको बताया था कि this RT-PCR method cannot be used to detect past infections. Remember this for your prelims. Okay guys, now those who are new, right now those who are old student, we are done with today's lecture, so you can leave. Those who are new, if you have any questions, please ask me in live chat. Srihari, yes sir, but if a person is affected by chickenpox and again it not affects him, why so? It is because चिकन पॉक्स जो है उस केस में उस पर्सन में एंटीबॉडीज है जो स्ट्रांग है. इन केस ऑफ सार्स ऑल्सो वी डू नॉट हैव डाटा कि वेदर सेकेंड टाइम इन्फेक्शन इज स्ट्रांग और नॉट. फरजाना बेगम, हेलो. ठीक है, सो हमें डाटा जब आएगा तो हमें एक्चुअल पता चलेगा अबाउट सार्स और कोविड-19. नाउ फॉर न्यू स्टूडेंट्स, गाइज, I am taking classes on Unacademy at every day 8 a.m. in the morning. So if you want to attend my other videos or other classes, just download Unacademy learning app and watch my all videos. Very interesting videos are there on Unacademy learning app, जो आपको मेरे केस में मिलेंगे. तो डाउनलोड कीजिए इस ऐप को. देन सर्च मी, क्या सर्च करना है? सचिन उमराव कदम, आपको ये सर्च करना है. अब मेरी प्रोफाइल मिलने के बाद यू नीड टू फॉलो मी एंड देन यू कैन वॉच ऑल माय वीडियोस जो अनअकैडमी पे, विच आर वेरी यूजफुल. क्लियर? सो ये एवरीडे 8 AM इन द मॉर्निंग वी मीट, रेगुलरली हम मिलते हैं. फाइन. दूसरा, every day at 11 AM we are taking live sessions on YouTube which are of current affairs. So every day we are taking current affairs on YouTube at 11 AM. Okay, fine guys. I guess there is no doubt or no question. And if you want to access the notes, अभी जो हमने slides देखी, ये slides अगर आपको access करनी है, देखनी है, तो you need to subscribe to my Telegram channel, that is t.me/Sachin_Kadam1. Okay, so this is my Telegram channel. Subscribe and you will get all the notes in the PDF format for free of cost. Okay guys, so thank you very much for joining. Stay home, stay safe, stay away from COVID-19. Take care of your family and your society. Okay guys, bye bye. Thank you. We'll meet tomorrow at 8 AM in the morning. Bye bye.